infinite scroll. You don't know when the thing stops. So आपके brain को message नहीं मिलता कि अब ख़त्म हो गया यार, एक और बार scroll करके देख लो, एक और बार refresh कर लो. This is very useful. क्योंकि content की actually आपकी attention थोड़ी बार lose हो जाती है, पर you think कि यार दोबारा करूँगा तो कुछ नया आएगा. Today is the fifth session or fifth episode of our series called Design in the World, and this is Design in AI. So I will start with just telling you guys that I don't know anything about this subject, and this will also be the last slide you see. So this whole talk, however long it is, will go from this slide back to this slide eventually, just reiterating the point कि मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है. But IDEATE Innovation, where I work, I'm a partner, is a human-centered design firm. A lot of our work is in the development sector with low-income, low-literate users in Pakistan. And we work with quite a lot of clients, international development organizations, as well as startups, and some local companies as well. You can check out more of our work on our website, ideateinnovation.com. This series of talks, which I've mentioned, this is the fifth episode of, is Design in the World. And the idea was that often designers kind of live in their own worlds. चाहे वो world एक ज़माने में Photoshop था, फिर Illustrator था, फिर अब Figma है, and you kind of just live in that space. आपको inputs आ रही हैं, outputs दे रहे हो, and it just becomes very siloed from the rest of the world. Whereas how I understand design and how we practice it at IDEATE, इसके design एक बहुत broad field है, जिसका ताल्लुक हर और field से होता है. If you want to solve any complex problems, you need to understand things way beyond your screen and your design software. That's where the idea for this talk came in. और अभी तक we've done talks on design and democracy, design in the law, design and faith. एक मैं भूल चुका हूँ, and then design and AI. ये मैंने वो open AI का graphic चोरी कर लिया. They don't respect copyright, so I don't either. So the idea is like trying to figure out what the intersection looks like. ये design है और AI है, इनके बीच में क्या है? How do they connect? I put out a survey कोई अब 1.5 महीना पहले, just on design and AI and some other connected issues. We got a lot of responses. काफ़ी interesting था. So I'll just go over some of the responses quickly. Can AI surpass human creativity? 46% yes. More basic. In some areas, 37%. No, humans will always be more creative. मुझे लगता है काफ़ी optimistic लोग हैं. और global inequity को balance करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए दुनिया को AI कितना AI play role कर सकती है कि नहीं? Somewhat likely 40%, not very likely 34%. AI being used for harmful purposes, 54% are very concerned, 37% somewhat concerned, not at all concerned कोई भी नहीं था. And ये थोड़ा सा obviously हमारा sample भी matter करता है इसमें. It was distributed through mine and IDEATE's social media outlets, so वो थोड़ा सा that's the sort of group you'd have here. अच्छा ये question था that I was also looking at for a while within this conversation. Will AI ever become conscious? Somewhat likely 40%, और दूसरी side पे not at all likely 10%. अच्छा, if it ever became conscious, हम यहाँ भी कर लेते हैं. अगर AI conscious हो जाती है, आपको पता है machine conscious है, it can think, it can feel, उसको turn off करना for whatever reason, would you be okay with turning it off? Would you need a reason कि उसने कुछ ख़राब किया तब आप turn off करेंगे उसको? Yeah, it doesn't really matter. It's a machine. You can switch it off forever. Who says कि एक conscious machine को turn off नहीं करना चाहिए because it's conscious? Who thinks कि कर सकते हैं अगर वो कुछ humanity के खिलाफ करे या कुछ गलत करे? How many say वैसे ही कर सकते हैं because it's a machine, it's not a human? सही है, ठीक है. I think a somewhat similar reflection ही था हमारे data में भी. It's a nice mix of opinions. पर ये मसला है इसके साथ कि I did this a month and a half ago and I now feel like ये data useless हो चुका है because I'm sure people's opinions have changed even within the last 6 weeks. Everything's moving too quickly. So अगर आप एक टाइम पे सोचना है कि यार आज आपका क्या opinion है इस बारे में, so unless you need to keep in step with what's going on, and even then आपका हफ्ते बाद opinion बदला होगा या महीने बाद बदला होगा, so it becomes very difficult to sort of have a certain opinion that you're putting out. So why are you guys here? And why am I here if I think everything moves too quickly and I don't know anything? I thought कि हम लोग ये देख सकते हैं फिर भी कि instead of design and AI का overlap, just AI की place in the world, एक तरह से overlap with the rest of our lives and our place in it. That might be a nice frame कि जिसको हम cover करेंगे. So most of this conversation will not really be about design, but जैसे मैंने पहले कहा कि design for me is in every part of our lives.
So I don't think of it as a separate category जो आपने cover करनी है. Similarly, I think at some point AI will play a similar role. So this sort of becomes the focus AI in our world. अच्छा होती क्या artificial intelligence में? बहुत बार AI का नाम ले चुका हूँ. जो लोग इस फील्ड में हैं, please shed some light on this. बेसिकली जो AI है वो नॉलेज की बेस पे हमें डाटा फॉर्म कर सकती है. डाटा की बेस पे जो है ना हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है. लेकिन वो जो जिस तरह एक आम इंसान हम सोचते हैं उस तरह वो सोच नहीं सकती. ठीक है. चीज़ को मतलब देख के वो इस तरह मतलब एनालिसिस नहीं कर सकता, सोच नहीं सकती. ठीक है. उसको आप डेटा दें तो वो कुछ आगे से निकाल सकती है उसका. ठीक है. मेक सेंस. एनीथिंग एल्स? आई थिंक डेटा की बेस पे डिसीजन मेकिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सही है. So ठीक है. Any kind of decision making, would any kind of decision making based on data be artificial intelligence? On the basis of data, yes. ठीक है. All of them are large language models. काफ़ी interchangeably ये terms अब use हो रही हैं आजकल because थोड़ा सा convergence हो गया है large language models के around AI की field का. But again, for an average person, that's what they see when they see or talk about AI at this point. ये क्या है? जिनको नहीं पता GPT का जो T है वो ट्रांसफॉर्मर्स हैं और ट्रांसफॉर्मर मॉडल था. मुझे अभी करेक्ट किया 2018 में भी पब्लिश हुआ था तो 2017 में हुआ है. अटेंशन इज ऑल यू नीड. डीप माइंड का था ना. हाँ, डीप माइंड ने पेपर पब्लिश किया था गूगल का. उधर से ट्रांसफॉर्मर मॉडल बने. वो काफ़ी बड़ा एक तरह से एक्सेलरेटर बन गए फॉर हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैव सिंस डेवलप्ड. सो ट्रांसफॉर्मर, मेरे बचपन के ट्रांसफॉर्मर्स ये थे, अब ज़रा चेंज हो गए हैं तो आई एम स्टिल यूजिंग दिस एज अ रेफरेंस. अच्छा, सो where are we headed with this? Clearly, I think this is a question that a lot of people have within any of the engineering fields or not. सबका कुछ ना कुछ कोई भी relation है even vaguely with technology. So everyone's asking this question right now. The reason for that is कि लोगों को नज़र आ रहा है कि this is something that's going to transform society at some level या कुछ ना कुछ opinion है about like where things are headed. तो हर किसी चीज़ में जा रही है. खैर वो साल पहले blockchain थी, 2 साल पहले design thinking थी. अब देखते हैं like actual कितनी देर का रहता है. अच्छा, सो अगेन आई डोंट नो कहाँ जा रहे हैं. आई डोंट एक्चुअली थिंक कि किसी को भी पता है. कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि यार 2028 में हम एग्जैक्टली ये कर रहे होंगे या समथिंग. बट व्हाट आई थिंक अबाउट, एंड दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट टेक्नोलॉजी, जब आती है नई टेक्नोलॉजी यू कैन रीड अप कोट्स दैट साउंड वेरी स्टूपिड नाउ. लेट 19th सेंचुरी में फिजिसिस्ट थे जो कहते हैं फिजिक्स खत्म हो गई है, अब डेवलप नहीं होगी. उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी में कॉम्पिटिशन खत्म हो गई, इससे आगे नहीं हम जा सकते. सो इट्स इन हाइंडसाइट साउंड्स वेरी स्टूपिड. But the fact is कि it's very, very difficult to predict technology and हम लोग किधर होंगे किसकी वजह से. But I think one thing that we can do and we can get better at is to see कि हम आए कैसे हैं वहाँ तक. And this applies not just to technology, but I think any complex problem. Let's say politics भी आप ले लें without getting into descriptions. If you think of the news today and say कि आज ये हो रहा है, you can make predictions about the future, but वो बड़ी disconnected होंगी. But if you see कि यार आखिरी 40, 50, 60 या 200 साल से क्या हो रहा था and you see a trajectory, you can hopefully chart some course कि यार maybe हम यहाँ जा सकते हैं. So my sort of like focus on this in this talk then became कि we will trace हम AI तक कैसे पहुँचे हैं और current time तक and then see potentially कि हम कहाँ जा सकते हैं. स्कूल में किसको हिस्ट्री पसंद थी? सही है, मुझे नहीं पसंद थी बिल्कुल भी. ग्रेड 9 में फेल भी हुआ था पाक स्टडीज़ में. मैंने डिस्क्लेमर डाल दिया कि ज़्यादा ट्रस्ट ना करें मुझे. खैर, अच्छा, सो लेकिन ये हिस्ट्री काफ़ी पहले से शुरू होगी. Before we had agriculture, we were hunter-gatherers, again, humanity generally. जो forage किया या animal मारा, वो खा लिया, and that was basically the way humanity lived. और nomadic थे, obviously you go wherever the food is. So you're traveling, you're not really attached to land. आप जा रहे हो with your own family, your own clan, and just traveling from between different places. इस situation में, let's say आपके पास आपने bison मार दिया या कोई बड़ा animal, and now you have a lot of food. उस खाने का आप क्या करेंगे? You're now the prehistoric hunter-gatherer human. What do you do with extra food that you have? Freezer नहीं थे. सही, preserve कर सकते हैं अगर possible है. Anything else? Sure. ये very वो Silicon Valley of you. Competition. Fair. Understand. सही है, सही. तुम्हारे जैसे लोगों ने एवोल्यूशन को पुश करते हैं आगे. नए तरीके ढूंढने, पर नहीं मेक सेंस. अच्छा, सो जनरली स्पीकिंग ऑब्वियसली डिफरेंट पीपल वुड हैव डन डिफरेंट थिंग्स. जनरली स्पीकिंग यू डिस्ट्रीब्यूटेड इट. सो बिकॉज क्या करेंगे आप, खराब हो जाएगा. इफ़ यू हैव अ क्लैन और कम्युनिटी दैट इज क्लोज इनफ, यू डिस्ट्रीब्यूट द फूड. इट जस्ट मेक सेंस. आपने खा लिया,
there's no point in keeping the meat, वो 2 दिन बाद ख़राब हो जाएगा. Also self-preservation side से you don't know how long it will last, so the sooner you just distribute it, the better it is for your whole community. वरना कोई भी बीमार होगा, it'll come back to you. Generally speaking, sort of bonds between clans बहुत ज़्यादा in your community that's moving in different places. There's close cultural bonds, but very small communities being formed around this sharing kind of dynamic. ये बहुत नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी. अगेन ये उस तरह का ग्राफ है जिसमें एप्पल अपने की नोट्स में देती है, जिसका कोई नंबर्स नहीं होते, बट जनरली स्पीकिंग डायरेक्शन नज़र आ रहा होता है. सो अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट रिसोर्सेज ह्यूमन वर टेकिंग, तो रिलेटिवली बहुत कम है. टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाता है. यू कुड प्रॉब्ली बी अराउंड फॉर a million years like that and not run out of resources, क्योंकि कंजम्पशन हो रही है उसी प्रॉब्ली स्केल पे जिस पे नई प्रोडक्शन हो रही है, एंड यू नॉट रियली गोइंग टू रन आउट ऑफ देम. उसके बाद हम एग्रीकल्चर डिस्कवर कर लेते हैं अराउंड 10,000 years ago. इससे क्या बिहेवियर चेंज होते हैं? अगेन यू इन दीज कम्युनिटीज़ क्या डिफरेंस आया लाइव्स में आपकी? Sure, more surplus. People stay in one place, property rights. Yeah. Yes. So you stay in one place, land becomes more important. Potentially owning the land becomes more important. That's basically it. Oh, sorry. Ability to grow food, excess food आ गया, ज़्यादा grow कर लिया. You can now keep it. Quality of life generally improves. खाना आपके लिए ज़्यादा readily available है. आपको और अपनी life कम danger में डालनी पड़ रही है to get calories. Connection to land becomes important, but because of that, ownership of land also becomes important. क्योंकि अब आपने एक land ढूंढ लिया जो बड़ा fertile है, अब वहाँ बैठ जाते हैं अपनी community के साथ, आप कहते हैं यहीं से मैंने अब खाना है और ये land protect करना है. उसकी वजह से कुछ हद तक economic disparity starts, because आपका land ज़्यादा fertile है, आप उसको protect करते हैं, आपकी community में भी rich होती रहती है, और वो community आप और छोटी करना चाह रहे हैं ताकि वो कम लोगों में distribute हो. Generally speaking, somebody who doesn't have more fertile land has a lower chance of surviving a famine, for instance. तो over time आप एक डिफरेंट किस्म की डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है. उसी ग्राफ पे थोड़े से ऊपर हमने लाइन डाल दी है. अब हम थोड़े से ज़्यादा तेज़ रिसोर्सेज निकाल सकते हैं लैंड से और नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, पर फिर भी काफ़ी लीनियर फंक्शन है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इनको नहीं इंक्रीज़ कर सकते. अच्छा, लेकिन आपके पास अब लैंड है, आप काम तो नहीं करना चाहते लैंड पे, बड़ी मेहनत है, तो आप कहते हैं कि हम दूसरों को हायर कर लेते हैं. सो यू स्टार्ट हायरिंग अदर पीपल ताकि उस लैंड की प्रोडक्शन बढ़े. आपके पास लैंड है, अगर आप अकेले लगे रहेंगे तो उसमें से यू कांट इवन यूटिलाइज द रिसोर्सेज इट कैन गिव यू, सो यू मैक्सिमाइज देम बाय हायरिंग अदर पीपल, यू बिकम रिचर. अच्छा, इसमें इज देयर अ लिमिट टू हाउ रिच यू कुड बी विद दिस सॉर्ट ऑफ मॉडल? सो देयर इज अ लिमिट, लाइक आपका लैंड बढ़ सकता है, पर फिर भी देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन अपर लिमिट फॉर हाउ मच यू कैन ग्रो, और आप कितने पैसे कमा सकते हैं उस लैंड से. Basically that point. You can't have infinite farm animals or infinite land or infinite crops from the same land. And you also can't trade them for the things you want at the right time. आपने crop grow कर लिया, अब आपको let's say उसके बदले में आपको कोई farm animal चाहिए, उस वक्त वो available नहीं है. आपका crop ख़राब हो रहा है लेकिन farm animal available नहीं था, so आपकी जो value आपने निकाली land से resource use किए, you can't actually turn them into value that you want, which might have been the farm animal या whatever the case might be. And over time their value diminishes. तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्रॉप उगा लेते हैं, उसको रख लेते हैं या एनिमल्स रख लेते हैं, आप कहते हैं इनको बाद में मैं ट्रेड करूँगा, over time their value decreases, so you're not as rich as you were the day you got them. How do we solve this problem? अगर ये प्रॉब्लम है उस ज़माने की, फिर लोगों ने क्या किया? You create currency. Because then अच्छा, करेंसी इसमें कैसे इसको चेंज करेगा इस डायनामिक को? Like why does currency matter? वो कहाँ से आई एग्रीकल्चर के अंदर? Sure. So basically the main concept is कि आपने natural resources निकाले थे, wheat या जो भी grow किया था वो valuable था, उसकी जगह आप कुछ और खरीदना चाह रहे थे उस वक्त जो आपके लिए valuable है, let's say farm animals, grain या whatever else, लेकिन आप वो उस वक्त available नहीं था या बहुत दूर था, आप नहीं खरीद सके, वो ख़राब हो गया. अब अगर आप उसको बेच के कोई करेंसी ले लेते हैं, वो आप कभी भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं. जब आपके पास नई चीज़ अवेलेबल होगी आप तब ले लें, तब तक के लिए आपने वो वैल्यू स्टोर कर ली है अपनी करेंसी के अंदर. सडनली आप जितने मर्जी एनिमल्स, जितना मर्जी चीज़ें उगाएं, उनको आप करेंसी में कन्वर्ट करें, सो योर एबिलिटी अपर लिमिट बढ़ गई है, आप कितने अमीर हो सकते हैं. एंड यू ऑल्सो हैव मच मोर टाइम, यू कैन जस्ट कीप द मनी. आप अभी नहीं खर्चना चाह रहे, यू कीप बिल्डिंग इट ऑन, आप कहें 5 साल बाद मैं बड़ा लैंड खरीद लूँगा, whereas उस पहले वाले तरीके से यू probably couldn't have made such big investments. And you can buy gold and other precious gems and whatever else
humans feel is valuable, and also get power potentially अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं. More time, more work, more time, more money. More problems नहीं डाला मैंने यहाँ, अभी वो बाद में आएंगे. अच्छा, इसमें diminishing returns हमने ख़त्म कर दिए. वो ये था कि जो पहले आपके पास एनिमल था या क्रॉप था, उसके रिटर्न्स डिमिनिशिंग थे. जितनी देर वो रहता है उतनी देर वो वैल्यू कम होती रहती है. अब हमने वो ख़त्म कर दिया. पर इसका भी लेकिन रेट ऑफ रिटर्न समवट लीनियर ही है. आप जितना उगाएंगे उतने पैसे लेंगे. वो आप मे बी कर्व लाइन ऊपर चली गई है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं है, लीनियर जा रहे हैं हम. इसके बारे में हम क्या करें? वी क्रिएट बैंकिंग, और उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट्स. बिकॉज नाउ हम ये कहते हैं यार मैंने ये चीज़ बेची 10,000 वट एवर करेंसी है वो मेरे पास आई. अब वो 10,000 ही रहेगी जब तक मैंने उसको यूज़ ना किया. मैं ऐसी जगह पे रखवा देता हूँ जहाँ वो साल बाद 11,000 हो जाएगी, और फिर उसके बाद उसके ऊपर होगा 121 12,100 एंड सो ऑन हो जाएगी. एंड आई एम जस्ट गेनिंग इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस मनी. मेरी जो पिछली वैल्यू है वो भी नहीं कम हो रही है, और मैं और पैसे कमाई जा रहा हूँ. एंड दैट्स वेयर सॉर्ट ऑफ बैंकिंग कम्स इन. हमने वो कर्व ऐड कर दिया उस रिसोर्स यूटिलाइजेशन या एक्सट्रैक्शन में ओवर टाइम. दिस इंसेंटिवाइजेस पीपल टू मेक सॉर्ट ऑफ कीप मोर मनी, क्योंकि आप लाइक अब रखेंगे वो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी. आप ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा रखें. इट इंसेंटिवाइजेस दैट सॉर्ट ऑफ सेविंग बिहेवियर. लेकिन अभी भी ये नेचुरल रिसोर्सेज से निकल रही है, जो कि अब आपका लैंड अगर आपने सारा एक्सप्लॉइट कर लिया है तो उसको मज़ीद बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. इस पॉइंट पे यू ऑल्सो देन स्टार्ट कम्पीटिंग फॉर रिसोर्सेज ज़्यादा, बिकॉज अब ज़्यादा इंसेंटिव है आपके पास लैंड एक्सपैंड करने का. तो आपका अपने लैंड को आपने पूरा कर लिया, अब आपके पैसे आ रहे हैं, हम कह रहे हैं उनका लैंड भी ले लो, और आहिस्ता आहिस्ता आपने ज़रा कब्जा शुरू किया अपने लैंड के आसपास, बिकॉज यू वांट टू गेट मोर रिसोर्सेज एंड यू वांट टू प्रोड्यूस देम क्विकर. अब हम क्या करें? यस, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. हमने कहा कि एक अपर लिमिट रीच कर ली हमने इन टर्म्स ऑफ हाउ मच वी कैन एक्सपैंड एंड हाउ रिच वी कैन गेट. लेट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मशीन्स दैट कैन create much more value than the laborer or any of the people that we could have hired. वो किया, faster production, faster accumulation of wealth. जल्दी चीज़ें बन रही हैं, जल्दी हमें पैसे मिल रहे हैं. अगेन वो compounding interest exist करते हैं. अभी I'm getting more money and it's making more money, getting progressively richer. ज़्यादा डिमांड फॉर गुड्स भी है, लोग पैसे कमा रहे हैं फैक्ट्री में काम करके, उनको और चीज़ें चाहिए, मैं उनके लिए और चीज़ें बनाता हूँ. सॉर्ट ऑफ दैट साइकिल कीप्स ग्रोइंग. लेकिन अब वो लोकल जगहों पे मैंने चीज़ प्रोड्यूस की, वहीं बेची. अब उससे भी मैंने एक्सपैंड करना है ऐसे कि अच्छा यार मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, ये इंडिया लैंड अच्छा लग रहा है, इधर जाके ज़रा इनकी स्पाइसेस ट्राई करते हैं, वो बेचने की कोशिश करते हैं. इस किस्म की फिर कॉन्क्वेस्ट फॉर जो है प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज नाउ यू कैन डू दिस एंड देयर इज़ अ नीड टू एक्सपैंड बियॉन्ड योर फैक्ट्री की बाउंड्रीज या योर लैंड की बाउंड्रीज. इसके साथ ही कोइंसाइड करता है फास्टर ट्रैवल, और हम लोगों की लाइन जो है वो काफ़ी ऊपर जाने लग गई है. और उस लाइन को आगे लेके जाते रहे और इस तरह कनेक्शन बढ़ाते रहे, एंड वी इवेंचुअली एंड अप एट अ फेयरली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर एवरीवनस कनेक्टेड. जल्दी से आप ट्रैवल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, अपनी गुड्स डिफरेंट जगहों पे भिजवा सकते हैं. प्रोडक्शन इवन कहीं और हो रही होगी, आपका बिजनेस कहीं और होगा, सेल कहीं और हो रही होंगी. ऑल ऑफ दीज नेटवर्क्स डेवलप आउट ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज यू ट्राइंग टू एक्सपैंड बियॉन्ड योर बाउंड्रीज. कि आपके पैसे कहीं हैं, यू वांट टू बी एबल टू मेक मनी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मूव इट एवरीवेयर, एंड दैट सॉर्ट ऑफ इंसेंटिवाइजेज दिस काइंड ऑफ कनेक्शन, और हम काफ़ी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आ जाते हैं. इसमें फास्टर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है. आप बैठे कहीं और होंगे, माइंस जो हैं वो अफ्रीका में हैं, वो यूज़ कर रहे हैं. you've completely disconnected your sort of surroundings from natural resources, कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ बेच रहे हैं, and so on. मज़ीद हमने कर्व ऊपर कर लिया, और इसी वर्ल्ड में because of all these connections we now have the ability to instantaneously transfer knowledge all over the world. Computers आए, personal computers आए, internet becomes more ubiquitous. Suddenly, like apart from goods and services जो maybe कुछ business people ही transfer कर सकते थे, all of us can at least talk to each other. Knowledge transfer होना शुरू होता है. Global connections बढ़ते हैं. मेरे network of friends and people I can potentially know are much beyond where even my grandparents might have imagined कि उनके हो सकते थे in their lives. इस दुनिया में हम लाते हैं Facebook को, और Facebook हमें, अच्छा Facebook पे बाद में आते हैं. Does anyone know who this guy is? नहीं, no idea. कर लें.
ये किसी को पता है? अच्छा, ऑर्किड वॉज अ सोशल नेटवर्क जो फेसबुक से पहले था थोड़ा सा, एटलीस्ट पहले पॉपुलराइज हुआ था। यहाँ हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर था, साउथ अमेरिका में बहुत पॉपुलर था, टर्की में बहुत पॉपुलर था, यूरोप और यूएस में इतना ज़्यादा नहीं था। और उस पर आप लाइक काफ़ी रूडिमेंट्री अब लगता है फेसबुक की निस्बत, पर आई थिंक वो बड़ा पर्सनल टाइप था, आप टेस्टिमोनियल जाके लिखें एक दूसरे की वॉल्स पे। इट बिकेम आई थिंक द फर्स्ट टाइम माई जनरेशन एटलीस्ट इन पाकिस्तान saw some sort of like social networking space online जहाँ आप content बना सकते हैं जाके और एक दूसरे के it's your space that I'm going into। बड़ी interesting सी feeling थी। उससे पहले I think नॉर्थ अमेरिका वगैरह में वो MySpace, AOL वगैरह ज़्यादा popular थे, but Orkut I think yeah, and Orkut I think our part of the world was probably the first social network that became popular। And the interesting part is कि this guy's name is Orkut, he's the founder of Orkut। ये एक टर्किश बंदा है, when he was looking for funding इसने नाम कुछ और रखा था अपने सोशल नेटवर्क का। जो वीसी थे फंडिंग दे रहे थे उन्होंने कहा योर नेम साउंड्स रियली नाइस, अगेन वो एक्सोटिक नाम था, नोबडी नोज दिस इज अ नेम, जस्ट नेम योर सोशल नेटवर्क ऑर्किड, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। दिस इज मिस्टर ऑर्किड इन 2018 presenting the history of social networks, probably very sad inside। उसमें अगर आप देखें ना तो I don't know if you guys can see, but Orkut and Facebook actually both started in 2004. But Facebook took a little more time to get out into the world. Orkut was much quicker, jaldi se phail gaya tha. Anyhow, this is him giving a presentation on another social network that he was trying to build in 2018 called Hello. And I know this because I was in that presentation. And that's also why when I found out that Orkut ek banda hai, jo ye bol raha hai. He was present, like so we knew we were going to meet him, and I still didn't believe कि ये सही जो भी मुझे कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। I thought कोई like fraud हो रहा है हमारे साथ। Anyhow, he presented like a whole idea for his own social network. Hello.com उसका नाम था। It was based more on interests and sort of common communities वगैरह। Interesting idea था, but again, social networks का भी problem होता है। There isn't an existing network, so you can't build it, and before you build a network, it crashes because too many resources go in. तो बेचारा didn't succeed again, but I felt sorry for him because Orkut काफ़ी popular था at some point, and then Facebook just ate it up. So when social networks came about, let's say early Facebook, early Orkut times, what did they promise? Like what was the promise of social networks? Connection? Popularity. Sure, popularity. Connections across the globe. Yeah, connections across the globe. Anything else? Instant reach. Yeah, instant reach, perfect. You have an audience now. Perfect. So yeah, I think all of these are correct. Gives everyone a voice, connects you with friends around the world, builds communities, democratizes business. बहुत लोगों ने अपने businesses बनाए off social media, and I think all of this turned out to be true. I don't think anyone can really deny कि इनमें से कोई चीज़ नहीं हुई. So in that way, the promise that it gave out all happened, I think, fairly how it was imagined. Potentially way beyond how it was imagined in terms of scale. उस वक्त probably Facebook के founders ये नहीं सोच रहे थे कि 3-4 बिलियन लोग इस पे होंगे at any point. So credit where it's due. Orkut बेचारा wasn't as successful, but I think it sort of started that, or was amongst the players that started that whole journey. So why did Orkut fail and Facebook succeed? Where did Orkut fail and Facebook succeed? Figured out how to monetize whatever it was. Like जो भी उसका initial promise था, communities थी, network था, Facebook figured out how to make money off it. And that's why Facebook, it basically did, I think वो भी बड़ा interesting था। शुरू में Google AdWords टाइप के ना वो अपने उस पर एज अ वेबसाइट प्ले करते थे। सो इट बेसिकली गॉट रेवेन्यू जो वेबसाइट व्यू का रेवेन्यू होना था, और गूगल एडवर्ड्स बहुत सस्ते थे, सो इट वुड ओनली मेक एज मच मनी एज लाइक a random website getting as many users. So they didn't figure out how to really make revenue through their own social networking game. It was just like it's a website, you make money because there's ads on the website. और वो भी बड़ी देर बाद आए थे towards the end when they were trying to sort of figure out how to stay alive. And how did Facebook make money? Like how did the monetization work? Yeah, it turned whatever that initial thing was, network connections, into data. That data was turned into money. That's where Orkut and other players weren't initially able to figure it out, because they weren't thinking of like what is the thing valuable within this, within the thing that is social networks that can make money, instead of just thinking कि page views आ रहे हैं, इससे पैसे कैसे बनाने हैं. So they basically figured out a novel way to make money from our interactions. And I think this is the important part, which sometimes gets missed out in this conversation,
कि ये डेटा आता कहाँ से है, ये डेटा हमारी अटेंशन से आता है. Like if we pay attention to something, we look at it, we get immersed in it, we give more data, that data gets converted into money, whatever that loop might look like. It starts with us paying attention to whatever's on that social network. शुरू में Facebook, then everyone else essentially eventually builds that up. And because that was figured out, a race starts. As with every technology that can make money, there'll be a race, there'll be competition for who can extract more of the thing that makes money, which happen to be data, which works through attention. And designers really helped in this. अच्छा ये icon पूरा load नहीं हुआ. This is the slot machine जो casino में होती है. Because a lot of our great design principles that have been formed from the last 15 or so years come from a lot of the same hacks जो casinos वगैरह run कर रहे थे for ages, trying to figure out कि लोगों का यहाँ कैसे रखना है. उसमें जो pull to refresh होता है, that's basically like a slot machine. So the way it works psychologically, it's a similar mechanism to like अच्छा मैं इसको दोबारा नीचे करूँगा कुछ नया आएगा. I'll get something out of this. Also a quick question, does anyone know कि मैंने कितने ग्लास पानी पी लिया तब से? Any other guesses? Okay. Sorry? Half, ठीक है. अच्छा मुझे भी नहीं पता. और उसकी रीज़न ये है कि ये मैंने अभी पानी ख़त्म नहीं हो रहा था तो आई वॉज फिलिंग इट अगेन. कभी आप लोग रेस्टोरेंट गए हैं जब नान या रोटी आ रही होती है अभी आपने ख़त्म नहीं की होती और आ जाती है, उधर आपको पता चलता है आपने कितनी रोटियां खाई हैं. सिमिलरली कुछ रेस्टोरेंट्स में यूएस में बहुत कॉमन है, दे जस्ट रीफिल योर ड्रिंक. जैसे आप बैठेंगे अभी थोड़ा सा पीते हैं वो एक और दोबारा रीफिल कर देते हैं. वाई हाउ डू यू थिंक दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर? Infinite scroll. The psychology that works with this is the same psychology that works with infinite scroll. You don't know when the thing stops. So आपके brain को message नहीं मिलता कि अब ख़त्म हो गया यार, पूरा हो गया. So because our brains have evolved to figure out कि यार ये चीज़ ख़त्म हो गई, अब मैंने एक ग्लास पानी पी लिया, अब मैं दूसरा ग्लास पीने वाला हूँ. If I keep refilling it before it ends, our brain doesn't understand कि वो मैंने पानी पूरा ग्लास पी लिया था. Similarly, that's the hack UX designers figured out for infinite scrolling कि आप कराते रहो. The task never ends basically. And that's what our achievement as a community. And all of this from the tech side was done using very simple, comparatively really simple recommender algorithms. At the core, वो ये कह रहे हैं कि you like this, you will probably like this. Or you're paying attention to this, you will probably pay attention to this. उससे आगे level पे your friends like this, so you probably will like this. And that's sort of like how the whole algorithm recommender जो है वो gets built. Very simple technology, very, very effective. और उसके थ्रू they figured out how to persuade us. Basically, आपने काम ये करना है कि attention तो है, वो attention रखनी कैसे है. आपने यूज़र को persuade करना है कि यार this is useful, यहीं रहो अभी. एक और बार scroll करके देख लो, एक और बार refresh कर लो, this is very useful. क्योंकि content की actually आपकी attention थोड़ी बार lose हो जाती है, पर you think कि यार दोबारा करूँगा तो कुछ नया आएगा, मैं इधर ही रहता हूँ. So those mechanisms allow us or allowed the companies to figure out कि हमें persuade कैसे करना है to keep going back into the loop. And that's what their real magic was with, again, user experience. अच्छा, time for a magic trick. मैं बहुत stupid लगने वाला हूँ यहाँ. उसके बाद context पता चल जाएगा आपको. Let's say मैं ना ये phone जो है ना अब खाने लगा हूँ. This is my magic trick to you guys, and I will try to persuade you that I've eaten this phone. This is the phone. How many of you got convinced कि मैंने खा लिया? Yes, one believer. The point of this was कि my nephew, जिसके साथ मैं video calls करता हूँ, he believes me every time. Like I do this random चीज़ें pick करके मैं कहता हूँ मैं खाने लगा हूँ, and he's like, oh, and then I'm like, अच्छा tummy ache हो रही है, and he's completely in on the, like he doesn't, वो completely convinced है, right? So in his reality, I've persuaded him कि ये reality है और यही हो रहे हैं. Why was I not able to convince you guys? Why am I able to convince Mustafa? Because the screen got cut off. Sure. Sure. Anything else? Target audience. बिल्कुल सही है, target audience different है. Sure. अच्छा, और बिल्कुल सारे पॉइंट सही हैं. Audience, life experience, ये सारी चीज़ों में क्या फ़र्क है? Like what's, ये तो एक तरह से facts हैं. What's the difference in the audience? अगर मैं उसको एक audience बना लूँ और आप लोगों को collectively एक बना लूँ, why is one audience easier to persuade than the other? Virtual versus real, that also gets added. All of that. So what happens is,
persuasion चलती है asymmetry of power पे. मेरे पास जितनी पावर है ना आपके ऊपर, मेरे लिए उतना आसान है आपको persuade करना. In that dynamic, he trusts me. मैं उसका अंकल हूँ, उसको probably trust ruin हो जाएगा जब उसको पता चलेगा. दूसरा ये कि I have the power to control what the angle is. मैं वीडियो पे बात कर रहा हूँ. Then I also understand कि he believes कि इस तरह की चीज़ें खाई जा सकती हैं. All of those things I know about him, and I understand कि इसको मैं कैसे set up करूँ ताकि he believes me. And that's how persuasion works. Like I can't persuade you because I don't have enough control over you guys. I don't know enough about you. I can't control the circumstance. But great magicians can. Like हम लोगों की सारी audience होगी यहाँ एक अच्छा magician आएगा वो हमें convince कर लेगा उसी तरह जैसे मैंने एक 2 साल के बच्चे को किया. Because he has figured out or they have figured out कि वो क्या dynamic है आप पे कैसे control लाना है. And वो persuasion is still possible. It's not कि audience आप unpersuadable हैं. I just don't have the skills. और इसके अंदर data जो है वो power है. Like I know him, I know what he's likely to believe, and that's why I can sort of have more power over him. Similarly, अगर कोई और audience होगी that I don't know at all, एक और बच्चा भी होगा जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है उसको उसके साथ यही किसी ने किया और उसके किसी बड़े ने कह दिया यार ये नहीं होता झूठ बोल रहे हैं. Suddenly I can't convince him because that data is missing. I haven't been able to alter my methods based on the data that I have. जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होगा दूसरे के बारे में उतना आपके पास कंट्रोल होगा, उतना आसान है उनको परसुएड करना कि यार ये जो मैं चीज़ कह रहा हूँ मान लो. एंड इफ यू कैन परसुएड देम, यू कैन टर्न इट इनटू अटेंशन, यू कैन टर्न इट इनटू मनी. द मोर डेटा, द ईजियर द परसुएशन बिकम्स, एंड वी गेट इनटू दिस लूप. लेकिन जो कंटेंट है, अगर लेट्स से मैं फेसबुक हूँ या यूट्यूब हूँ और मैंने कंटेंट क्रिएट करना है और मुझे 3 बिलियन लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं, अब सारा कंटेंट अगर मैं बनाई जा रहा हूँ, ये तो टीवी चैनल्स भी कर सकते थे ना कि लाइक उनके पास कंटेंट है, लेट्स गेट पीपल ऑन बोर्ड. वो नहीं कर सके. देयर इज एन अपर लिमिट टू हाउ मच कंटेंट यू कैन पुट आउट देयर. इवन इफ पीपल आर नाउ एडिक्टेड टू दैट, टू सॉर्ट ऑफ योर स्क्रीन्स, योर कंटेंट, it still has an upper limit, so you want to go past it. So we get people addicted to getting attention. So they create the content so that they can get attention. That gets other people's attention. That gets us more data, and sort of we add a loop on top of a loop, and that sort of keeps going. So we create a content, attention, data, persuasion, money loop. Unforeseen क्या हुआ इस सारे loop और इस सारी चीज़ की वजह से? Any negatives that happened or any other things that we couldn't see? Misinformation? Influencers आ गए. ठीक है. Anything else? Privacy invasion बिल्कुल सही है. So a bunch of these things, social isolation, bullying is way worse in schools, or a bunch of other problems, misinformation and all of these just became exasperated. They became much more, I think, part of our lives. अच्छा, जो designers and engineers and companies में बना रहे थे ये चीज़ें, did they want to do these things? आपके ख्याल में कुछ सुबह उठता है ये सोच के यार मैं आज यही काम करूँगा. जनरली स्पीकिंग, लाइक अगेन देयर आर पीपल, पर एज कंपनीज 20,000 लोग अगर फेसबुक में काम कर रहे हैं, डू मेजॉरिटी ऑफ देम थिंक कि आज मैं दुनिया को ज़्यादा ख़राब जगह बनाऊँगा. इफ़ आई वॉज एट फेसबुक एंड आई फिगर्ड आउट, या आई थिंक पहले इंस्टाग्राम ने किया था, लाइक एवरीथिंग एल्स, फिर फेसबुक ने खरीद लिया, पर वो जो पुल डाउन टू रिफ्रेश वाला मैकेनिज्म था, आई वुड बीन वेरी प्राउड ऑफ माई डिज़ाइन स्किल्स टू बी एबल टू फिगर दैट आउट. एंड आई वुडंट हैव नोन कि यार 5 साल बाद 7 साल बाद इससे क्या क्या कॉजेज होंगी. That's not really like, nobody can predict those, as we said earlier. I was just doing my job and probably doing it really well, probably getting compensated. Did all of these exist before social media? Yes. That's the question you had asked earlier. तो फिर social media ने क्या किया? We'll come to that. Yeah, that's the question. कि ये अगर पहले से exist करते थे, तो social media ने इसमें क्या किया? Because create तो उन्होंने नहीं किया. Like attention लोगों को चाहिए थी, bully लोग करते थे, सारा कुछ होता था. फिर सोशल मीडिया का क्या कसूर है? बिल्कुल ये समवट अनरिलेटेड चार्ट है. बेसिकली इफ़ वी स्टार्ट द टाइमलाइन हेयर, फर्स्ट ह्यूमंस, और यहाँ जाना शुरू होते हैं हर रो में, एंड ईच ऑफ दीज डॉट्स इज़ 100 ईयर्स. 200 साल, 300 साल, 400 साल, इधर जाके हम लोग 7500 ईयर्स पे पहुँच जाते हैं. 75 डॉट्स हैं ये. वी कीप कमिंग डाउन यूँ रोज़ में. यहाँ हम एग्रीकल्चर डिस्कवर करते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर से हम आते हैं, कोई एक ऑलमोस्ट कॉलम से कम लगता है, वी क्रिएट मनी. यहाँ एक डार्कर, हाँ यहाँ आती रहते हैं, उस पर न्यू मॉनेटरी सिस्टम पे चलते हैं. यहाँ हम बैंकिंग उसको बढ़ाने का फिगर आउट करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट. यहाँ हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे पहुँचते हैं 200 साल पहले. इसके अंदर एक बहुत छोटा सा एंड में रेड डॉट है, वहाँ हम सोशल मीडिया में आते हैं. रेड डॉट का एक पार्ट है विच आई विल कम टू.
this is the scale at which we've been working. तो अभी तक जो मैंने जो sort of बातें की हैं, this is how that's been changing. So again, exponential increase का एक quick सी representation है of how the world changes very little and then it changes a lot in much less time. And we have a very hard time as humans trying to deal with exponentials. Like हमें बहुत मुश्किल से समझ आते हैं क्योंकि our brains haven't been designed or evolved to understand exponentials. हमारी दुनिया linear है, नहीं समझ आते. इसका quick सा एक question है, again, not very like इम्तिहान नहीं हो रहा किसी का, but I find this interesting. Imagine करें एक लिली पॉन्ड है जिसमें वो पॉन्ड्स वाटर लिलीज होती हैं. वो एक वाटर लिली है फर्स्ट डे पे, हर रोज़ वो डबल होती है. पहले दिन 1 है, 2 हैं, फिर 4 हैं, 8 हैं. मैं आपको कहता हूँ कि यार 100th डे पे that whole pond gets filled. ठीक है. When was the pond half full? What day? 100th डे पे फुल हो गया. हाफ फुल कब था? किस डे पे? Anything else? लेट समझ आई ना? हाँ, so 99th, क्योंकि रोज़ वो डबल हो रहा है. 99th पे वो हाफ था, उससे पहले वो क्वार्टर था. The idea being कि again the answer is fairly simple, but that's not how we think. कि हमारे दिमाग में वो ज़्यादा से हम सोचेंगे 50 नहीं तो 70 कर लेते हैं, क्योंकि थिंकिंग ऐसा इंक्रीज हो रहा है. पर एक्चुअली एक्सपोनेंशियल्स हैं जो डबल हो रहे हैं, हमारी नेचुरल एबिलिटी नहीं है उसको समझने की. जनरली इफ़ यूर आपने कोड किया हुआ है, लूप्स बनाए हुए हैं, तो यू प्रॉब्ली हैव मोर ऑफ एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लूप्स वर्क, एक के ऊपर दूसरा मल्टीप्लाई हो रहा है. पर वैसे हमारे ब्रेन्स में ये इजंट नेचुरल फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ये उसकी अच्छी आई थिंक रिप्रेजेंटेशन बन जाती है. अच्छा, बैक टू व्हाट डिड सोशल मीडिया डू. सोशल मीडिया ने चीज़ें क्रिएट नहीं की, पर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स वर जस्ट मेड मच वर्स इन अ मच शॉर्टर टाइम देन इट वाज पॉसिबल बिफोर सोशल मीडिया. मेनली बिकॉज वो एक्सपोनेंशियल सॉर्ट ऑफ वही कॉन्सेप्ट डेटा कंजम्पशन पे रिलाई करता है, एंड इट्स लाइक अ लूप बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ अ लूप, जस्ट मेकिंग यूज ऑफ डेटा मच फास्टर. और जैसे हमने नेचुरली सोर्सेज पहले फिगर आउट किए कंज्यूम करने, नाउ वी फिगर आउट वही अटेंशन एंड देन डेटा. The important thing I think here is कि ये जो जितने problems हमने बात की है, like these negatives, we've only realized them way after. कोई predict नहीं कर सकता था कि यार जो वो again refresh वाली चीज़ बना रहे हैं या mechanism बना रहे हैं, that will lead to more teenage suicides in 15 years. That nobody intended it, and nobody could see that was happening. So that's really important to understand when we sort of figure out technology कहाँ जा रही है. और इसके लिए I think important जो एक concept है वो ये है कि अब सोशल मीडिया इंटैंगल हो चुके हैं हमारी हर लाइफ के पार्ट में. बिजनेसेस उस पर रन हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवन रेस्क्यू सर्विसेज के लिए, बट ऑल्सो एवरीथिंग एल्स. लाइक एवरीथिंग रिलाइज ऑन दिस सोशल नेटवर्किंग मैकेनिज्म. तो नाउ वी कांट रियली जस्ट से यार इसका स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो इसको, बिकॉज दैट देन टर्न्स ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट हैपन इन आवर लाइव्स. सो वी कांट रियली अनडू द डैमेज और द गुड साइड, बिकॉज इंटैंगल हो चुका है. इट्स पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, पार्ट ऑफ आवर द वे वी लिव आवर लाइव्स. एंड माई हाइपोथेसिस इज कि ये हमारा फर्स्ट ह्यूमैनिटीज़ फर्स्ट कॉन्टैक्ट था विद AI. सिंपल AI थी, रिकमेंडेड एल्गोरिदम है, बट एल्गोरिदम नॉनदलेस फर्स्ट कॉन्टैक्ट है. उसने मैक्सिमाइज़ किया जितना वो कर सकता था, एंड इट सॉर्ट ऑफ प्रॉबेबली रीच्ड इट्स पीक अ फ्यू इयर्स अगो. अभी तक समवॉट प्लेटो हो रहा है इन हाउ मच इट कैन ग्रो. एंड सेकेंड क्या है, प्रॉबली नॉट अ सरप्राइज. I think in the form of large language models, we're seeing our second contact again. AI वो भी थी algorithm के level पे, ये भी हैं. It's a second contact with a slightly different kind of algorithm, again based on similar basic technology. इनका क्या promise है? Just like social media का हमने पहले describe किया, what's the promise of AI? Positive क्या हो सकता है? Solve problems quickly. Anything else? Saving you time. Productivity for sure. Yep, sure. Yeah, you can get it to do a lot of the repetitive tasks we want to do, or we don't want to do. To make better decisions, sure. So ये सारी चीज़ें हैं that the AI could potentially promise, or at this point is promising. So basically, more or less, efficiency, scientific breakthroughs भी हैं. There's protein folding की चीज़ें थी बड़ी interesting, happened quite recently. फेयरली बिग ब्रेक थ्रू जो कि फ्यूचर में प्रॉब्ली काफ़ी डिजीजेज सॉल्व कर सकता है या हमें हेल्प कर सकता है. पीपल इवन हैव बिन वर्किंग ऑन सोल्यूशंस फॉर क्लाइमेट चेंज. इंटरेस्टिंग पोटेंशियल चीज़ें हैं जिन पे काम हो रहे हैं, और एटलीस्ट प्रॉमिस है जिन पे हो सकता है. सो लेफ्ट पे सोशल मीडिया के कुछ प्रॉमिसेस थे,
राइट पे AI या लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेसिफिकली के अराउंड सॉर्ट ऑफ जो है डेवलपमेंट हो रही है उनके कुछ प्रोमिसेस हैं. फर्स्ट वाले वी सॉर्ट ऑफ मोर और लेस अग्रीड के were true. I think this could also be more or less true to different extents. I think most of these things will happen. We'll become more productive. We'll probably make scientific breakthroughs. We will probably in some way be able to make better decisions around climate change and so on as we become more efficient and so on. So masla kya hai? After effects. We don't know the after effects. Unforeseen. Sure. Unforeseen results. Creativity कम होती जा रही है. For sure, I think I would say कि if that expands the current sort of system, that's potentially going to happen. Yeah, data biases, the data you feed in. Example, early 2000s में, if we had to do a Google search, we had to go through like several web pages. Yeah. And like earlier than that, like if our like fathers had to like, research something, they had to buy magazines. Probably काफी पढ़ी करनी पड़ती थी. पढ़ी होती थी, but they used to sift through a lot of knowledge that would otherwise help them, right? Yeah. So I think this like pinpointed sort of shortcut answer that you get, I think it's going to hook us to this very sort of like बहुत ज़्यादा आपको जो the process itself I think is also valuable and it will sort of cut that. Yeah, for sure. I think it sort of allows you to jump to whatever final answer it's given you, and you build over time trust in that, और वो उसकी वजह से थोड़े you might trust an answer that doesn't have the right data behind it. इसमें actually काफी difference है about the data we put in. It can also generate its own stuff out Yeah. of that. So I think this is one very major difference. For sure. More of a loop again कि वो data जो बन रहा है उसकी कोई upper limit नहीं है, वो खुद ही बना के वापस and potentially even get trained on it later and so on. For sure. So I think all of these make a lot of sense. I guess the bigger problem here with the AI is like we had seen the time of the social media. Now we had to focus on कि policies क्या होनी चाहिए to use all of these models rather than कि हम उससे कहेंगे ये negatives है. Negatives हर चीज़ के होते हैं. Right. But we should be like on a global level we should be afraid about कि इसको use कैसे करना है. We should have a strict policy in the IT sector के कौन सी चीज़ें develop करनी चाहिए. कौन से models हैं जो कि harmful हो सकते हैं. Because Sure. at this moment हमारे पास कोई policies नहीं. Sure. Yeah. No. So we should try to figure out. Trying and thinking about the same problem, but not on a mass scale. But अभी as such कुछ है नहीं Right. productive हमारे पास. Probably chaos GPT नहीं बनाने चाहिए हमें कुछ सालों में. No, it makes a lot of sense. I think अभी कोई regulation नहीं है that sort of puts any boundaries on things. और उसका फिर again वो problem आता है थोड़ा सा when we talked about our human time frames being and timelines being very linear versus technology being exponential. उसमें we still don't have good laws for social media for instance. Like कुछ चीज़ों के हैं सब privacy के बना लिया ये कर लिया कोई फिर नया problem आ जाता है 2 साल बाद and we like अच्छा इसका क्या करते हैं. And that's because we as humans will think about those linear time frames. हम कह सकते हैं यार 50 साल बाद property के लिए ये law ये problem आ सकती है let's make a law now. But वो इतनी unpredictable technology के it becomes really hard for us to preempt anything. But very very important point. So just even if we just look at persuasion जो हमने पहले बात की we're not trying to predict और क्या चीज़ें हो सकती हैं. Again I'm trying to sort of stay away from trying to say कि अच्छा artificial general intelligence हो जाएगी या conscious machines हो जाएंगी बहुत unpredictable है. But we can I think look at persuasion जो हमने पहले बात की it already exists. It's been a big part of our lives for 15-20 years and big part of how tech companies have made money. So we just sort of I thought we'd just focus on that. अच्छा अभी इसमें एक एस्पेक्ट ये है कि सोशल मीडिया ने जो एक चीज़ की शुरू का प्रॉमिस भी था और उसी इट्स स्टिल समथिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम काइंड ऑफ इज बिल्ट अराउंड दैट वो ये है कि हमारी रिलेशनशिप्स हैं विद अदर पीपल एंड सोशल मीडिया मीडिएट्स देम. सोशल मीडिया बीच में है. मेरे आई डोंट नो कितने लोग हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जो मोर लेस मेरे इंस्टा फ्रेंड्स ही हैं एट दिस पॉइंट. लाइक पीपल आई यूज्ड टू नो कॉलेज वगैरह में ये वो मैं उनसे मिला नहीं हूँ सालों से लेकिन इंस्टा भी बातें चल रही होती हैं रैंडमली. सो हमारी रिलेशनशिप मीडिएट कर रहा है सोशल मीडिया हमारे बीच में एक तरह से दैट्स सॉर्ट ऑफ द लिसनिंग डिवाइस उसके थ्रू हम जा रहे हैं. एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ द रोल फेसबुक एंड ऑल ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेड फॉर द लास्ट 15 years कि वो मीडिएट कर रहे थे रिलेशनशिप्स को. एंड a lot of the problems that we've seen where misinformation comes in, where a lot of the other bullying comes in, all of that happens through that dynamic. Social media बीच में लोग वही हैं पर social media उनको somehow incentivize कर रहा है to cause a lot of the problems that we've talked about. So ये interesting dynamic I think important to understand कि दोनों साइड पे वही लोग हैं जो पहले भी थे but suddenly जिस तरह बचपन में अगर 90s में स्कूल में आप बुली हो रहे हैं ना तो आप होपफुली घर जाके you now don't have to face your bullies. अगले दिन तक के लिए आप साइड पे हैं. अब सोशल मीडिया पे हैं वो आपके बुलीज वही हैं
वो आपको मैसेज भी भेज सकते हैं, आपको रीच आउट भी कर सकते हैं, आपकी बातें भी आगे लगा सकते हैं. Suddenly there's no way out. Your relationship has been taken over by this tool that exists in the middle. And we've seen a lot of problems being caused by that. And I think one of the dangers now is that instead of mediating relationships, these large language models will, or currently are starting to, but will allow us to form relationships with them directly. पहले सोशल मीडिया अगेन बीच में है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बीच में सोशल मीडिया है. अब वो सोशल मीडिया के बजाय वही जो टेक है, मैं उसी के साथ रिलेशनशिप बना सकता हूँ. लाइक AI बॉट्स हैं बहुत सारे, देयर इज लिटरली अराउंड वो रिलेशन बने इसलिए हुए हैं, पूरी पूरी कंपनीज आर जस्ट बिल्डिंग दिस बॉट्स दैट यू कैन टॉक टू बिकम फ्रेंड्स विद, सो वो सारी चीज़ें. एंड सडनली द सेम डेंजर्स, अगेन नए डेंजर्स नहीं आए, ह्यूमन चेंज नहीं होंगे, बट सडनली द सेम डेंजर्स जो बीच में रह के मीडिएट करके हो रहा था, वो एक्सपोनेंशियली आई थिंक इंक्रीज हो सकते हैं इफ़ यू डोंट डू दैट राइट, क्योंकि सडनली आपने वो रिलेशनशिप्स बनाई जो सिंथेटिक हैं. Designers role here in terms of जी जी. Snapchat has my AI now. Yeah. Horrible. Yeah, and people are going to use it, right? Yeah. To form relationships. That's the first thing Yeah. that came to my mind. It's been designed to create. Yeah. No, for sure. I mean, ChatGPT wasn't created to form a relationship. You're not going to log Yeah. into the same chat, talk to chat. But people will build things on top of it. My AI has a face. Yeah. It's an alien-ish creature. Yeah. That you, and it's always at the top of your list. Yeah. So it's always there to talk to. Yeah, for sure. So अब आप ये सोचेंगे there's companies also जो पहले से exist करती थी. ब्लैक मिरर की एक एपिसोड थी, मुझे नाम उसका भूल गया है, बट वो जो if somebody dies वो उसका chatbot बनाते हैं and then you can talk to it, build a relationship. That actually exists. They're just getting a lot better now with large language models. तो somebody like dark humor but jokingly we were talking कि मेरा बहुत ज़्यादा content exist करता है अब इंटरनेट पे, और वो ट्रांसक्राइब हो जाएगा बहुत जल्दी. So technically somebody could build a chatbot of me very quickly, and it will probably answer questions fairly similar to how I do. Unfortunately that will just become easier, तो जिनका कम भी डेटा है वो भी बन जाएंगे. So suddenly we're forming not just relationships through technology, but we're forming these intimate relationships with technology. So is this going to be the same thing, or like at least a similar concept to uploading your brain to the internet sort of thing, which is something, that's what they said about, okay, if you die, the smartest people, Steve Jobs, Albert Einstein, they should upload their intelligence because we want to keep talking to them. We want them to keep creating. Do you think this could, in the form that it is right now, or like maybe 5 months from now, if this AI does get developed, do you think we'll be able to reach that point? Yeah, so there's, I think the core difference might be that as far as I know that argument, वो वाली thought, it's been mostly that you can upload your consciousness. Exactly. So you can somehow feel being alive in that space. There's that argument. Ray Kurzweil is this futurist जिसने बहुत इस पे लिखा है. He's obsessed with basically making humans immortal. और उसका वो आया इधर से था कि his dad died when he was young, and he wants to. That was like the trauma that caused his sort of obsession with elongating human life. So he एक तो he's when he dies उसकी body वो होगी जो freeze करते हैं, वो सारा कुछ है. ये cryogenically frozen. But also he has already, what he's done is his dad also wrote a lot of books. So he's used all of that data to build a chatbot for himself to talk to his dad. So वो already कर रहा था even before these things started, because these are people who are at the sort of forefront of technology. But this will become very common now. आपने, I'm sure साल बाद कोई local AI गालिब AI भी बना रही होगी जिससे आप बात कर सकते हैं. तो हम ये कर लेंगे. But the idea being that we had a lot of unforeseen bad outcomes from just letting technology mediate our relationships. And now we don't know what those outcomes will be, but my hypothesis would be जब technology ही वो relationships बन जाएगी तो हम वो exponentially increase कर सकते हैं उन problems को. Now you can look at webcam images and basically build 3D models of people. वो भी बेहतर होता रहेगा. All of us have CCTV footage of ourselves somewhere. So eventually there won't be much difference in somebody who has a lot of recorded video of them, Joe Rogan की तरह, or like somebody else who doesn't, and में सबके avatars बन सकते हैं, and a lot of the same things can happen on them. अच्छा, synthetic relationships की हमने बात कर ली. And now if we go this route, what will happen is कि पहले हम लोग जो पैसे बनाने का तरीका क्या था कि आप कितनी attention ले सकते हैं. So it's a race for attention. Like how do you create content जिस पे लोग रहें, उनको persuade करें. Now if you can just create those relationships with people, and Snapchat AI वाला जो है, वो bot है, if it can just form a relationship with a kid where the kid feels like ये मेरा best friend है, then Snapchat has the kid on their platform for at least 10 more years. And that becomes, the race changes from going for attention to intimacy. It's like relationships build कर रहे हैं,
चीज़ वही आपने persuade करना है सारा कुछ. It just allows you much more personal level of interaction. Customized content अभी से बन रहा है, मज़ीद बनेगा. I already know what you, as an AI company or as one of the social media companies, I know everything about you, probably can preempt your decisions better than you can. There are examples of this all over the world. मैं आपको in a few years probably Netflix पे exactly वो content दिखा सकता हूँ जो आपको चाहिए. That will keep you there. I can create endings to films based on what you like, and all of that sort of to keep in that loop. Again, adding कि आपके साथ जो शायद वो movie देख रहा होगा वो एक और AI bot भी हो सकता है, Netflix नहीं बनाया हो, for you to talk to within that movie. Again, all of these just talking about relationships. What this is doing is कि वो जो asymmetrical power की बात की थी ना, जब मैंने वो 1-2 साल के बच्चे को convince कर लिया कि मैंने वो फ़ोन खा लिया, आप लोगों को नहीं कर सका. This is where that becomes really important. कि the amount of power Facebook or Instagram or all of these companies have over me, with the amount of data they have on me, all of my behaviors, वो already इतनी ज़्यादा है कि I can't really outdo them. Like I can't change my behaviors जो वो predict ना कर सकें. And then imagining at a level where now I have a bot that I've been talking to for 5 years, और मैं हर बात share कर रहा हूँ because I think it gives the best advice. That level of power will just be exponential. So that's the thing I think where the power dynamic will just become exponentially worse. And we might fall in love with that AI. किसी ने Her देखी हो ये movie? That again बड़ी interesting है because quite a few years ago, but you can, all of us probably can imagine this happening fairly soon, if not now. Why can't we stop this? Not just this, but generally, like हमने बहुत सारी चीज़ें देखी where humanity invents something, creates something, it's going wrong, but we can't really stop it or don't stop it. क्यों होता है ये? Sure, yeah, we can't preempt negatives. Anything else? There's a profit motive behind it. Profit motive. पैसे आप नहीं बनाएंगे, कोई और बना लेगा. And even if you look at other problems like कितना ज़्यादा defense budget होता है different countries का, nobody will, if you just ask the people there कि यार do you really want कि इतने पैसे यहाँ जाएं या healthcare में जाएं, education में, everyone will like इधर जाएं. पर because वो कहेंगे यार हमने अगर यहाँ ना डाला तो हमारे enemy डालेगा और हम लोग नहीं बचेंगे. So और वो भी यही कह रहे हैं. So there's a network effect of nobody wants this thing, but everyone will do it because they think other people will do it if they don't. And that can apply at a very personal level. जिस टाइम हम companies में बात कर रहे थे, अगर मैं नहीं बनाऊंगा ये तो कोई और बना देगा. But that also applies to every level of society where countries हैं या बड़ी-बड़ी organizations हैं, they're all in that sort of same competition. So there's no stopping because no one person can stop it, just like no one person is to blame for the negatives that happen. And the idea being कि जिस तरह के इतना लंबा हिस्ट्री लेसन के तो किए थी कि बहुत ज़्यादा हमने ओवर टाइम we've built one problem onto another. To solve that problem to increase profits, we built another thing that causes more of the same problem. So कोई नई problems हमने नहीं बनाई, we've just created new ways of making the same problems worse. And that's why it's very difficult to try to reverse things. कोई एक entity नहीं रोक सकती whether it comes to like हम climate change cause कर रहे हैं, doesn't anyone want to cause it? No. But eventually you're like अच्छा फ़ोन तो बनाने हैं, लोगों को चाहिए, मैं नहीं बनाऊंगा वो बना लेंगे, तो चलो माइन करें और. So it becomes like this loop where कल को एप्पल कहेगा हम शट डाउन हो रहे हैं क्योंकि ये कॉज कर रहा है क्लाइमेट चेंज, वो सारे इंजीनियर्स सैमसंग चले जाएंगे और वो उतने ही फ़ोन बन रहे होंगे दुनिया में, वो नहीं रुकने वाला. एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक वेयर दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉब्लम. और अब हम उसके ऊपर काइंड ऑफ दी सुपर पावर्स ऐड कर रहे हैं विद एआई, मेकिंग दैट एक्सपोनेंशियल कर्व जो हम कह रहे थे ना, कर्व ग्राफ खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो रहा है अब और हम ऊपर जा रहे हैं. और अभी से काफ़ी इंटैंगल हो रहा है. जैसे सोशल मीडिया में मैंने एग्जांपल दिया कि मे बी शुरू में अगर कोई मार्क जुकरबर्ग का कंप्यूटर चोरी कर लेता ना 2004 में तो शायद वो ना बनता. बट नाउ दैट इट्स इंटैंगल वी कांट रियली बी लाइक ऐसा सोशल मीडिया शट ऑफ कर दें क्योंकि सारे उस पर रिलाई करते हैं. एंड एआई, ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज गेट इंटैंगल्ड प्रोग्रेसिवली क्विकर. तो अगर उसको 10 साल लगे हैं, एआई विल प्रॉब्ली टेक 2 years and be, or LLMs will probably take 2 years and be as entangled. What do we do about this? The reason why I've like sort of focused more on the negative side of things, generally through the charting of time, 2 reasons है. एक तो ये है कि I think if we had just talked about कि यार मिड जर्नी इतना कूल हो गया और मिड जर्नी अब ये भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. एक तो everywhere you go on LinkedIn there's like, I think we talked about this, everyone's an expert on AI, just talking about कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, सारा कुछ कर लिया. So what I wanted to talk about more was like a broader societal discussion and where technology generally is placed और उधर AI किधर आ रही है. Where it goes, I think you're completely right. Like, and that's the point. Like अभी as designers and engineers, if we think of it from this perspective, क्या we don't really know कि क्या होगा, but it's early enough for us to try making conscious decisions
कि यार हम लोग empower कैसे कर सकते हैं यूज़र को when making our products, can we think about that now instead of 3 साल बाद जब मसला बड़ा हो जाए and then we can't really back out of it, तब हम क्या करेंगे? And that's sort of like completely I think agree with that perspective, but the need for that I don't think is being talked about enough कि इसकी actual need है क्या, and the need is कि power asymmetry जो है ना between the person and your products, that sort of is the thing that I really want to highlight. Whereas I think a lot of the discussions, even when they happen on the doom side, it's seen as a collective कि AI आएगी, वो Skynet बनाएगी और सारे मर जाएंगे. Sort of that very high level. But I think it's in terms of like relationships and how does the individual person have a relationship with technology, how we can think about that better, I think would be great if we can do more of that. You don't really need to predict the problem. You just see कि यार अभी हम कैसे इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं. And that sort of comes back to regulation, whether इधर या कहीं बाहर होती है. The inclusiveness portion of it is what I was thinking as well. Okay, so we have large language models that can listen to us translate in real time. Yeah. Right. And that is the biggest gap, right? Even if people who don't know how to write or type on their keyboards now, because writing is redundant as well, right? So people who don't know how to type, they know how to speak. And if we could just make more models based on that, these people, then we could encourage them to use AI for whatever they want, right? And somebody who does not even know how to write can now talk to a computer and has great artistic ideas, can now be one of the world's foremost designers in about, and you know, with the pace of advancement, you could do that in 6 months, or you could do that in, even if we do it in the next 5 years with all of those ethical considerations being taken care of, right? But still, it is a possibility now, which it wasn't. So, like, we're rooting for the best possible outcome. But no, I think I was promised an answer to another question that I had, क्या था? which was that large language models are NLP essentially. It's not Skynet in any way, shape, or form. What it's a probability model. What it's doing is it's taking the best probability of the words of English used in a sentence based on the probability of words that you gave it. So it's just calculating like some algorithm, and it's giving you a number, right? And that number is being translated into words that we can now see. ChatGPT has no idea what it's saying to me. How is it Skynet? What should we be afraid of? I don't think it's Skynet, पहली चीज़. But I think what I'm scared of, again I can't tell you कि आप किससे हो, is कि जो मैं वो relationships की बात कर रहा था ना, और power की, I think that's the important part. We destroy ourselves later on. Like the technology, so Facebook किसी घर आके नहीं उनको मार रहा, but the way we deal with technology and we don't know how to deal with technology, and we ruin our own relationships and our own data sources and our own learning. At a societal level, we end up destroying ourselves when there's enough bad incentives out there. So ChatGPT किसी को आके again नहीं मारेगा, but if there's enough, like let's say 2016 में Cambridge Analytica ने बिल्कुल rudimentary से 5 personality traits Facebook से use किए और पूरे campaigns बनाए और लोगों को manipulate किया. अब level of manipulation possible जो है with like probably hundreds and thousands of bots that you are convinced are people and your friends on the internet, that's what is the problem. So I think it's completely correct कि itself उसको कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है, but we can build things on top of it with the wrong incentives that end up destroying all of us. And that's where I think the power वाली चीज़ really becomes really important, and incentives वाली चीज़ कि incentive है क्या. अगर आपका incentive हमेशा ये है कि profit maximization at the shortest time frame करनी है, तो then that's the worst possible thing we'll do. If your incentive is कि यार वो जिसमें power देने का user को कि वो जो एक अनपढ़ कोई औरत हैं जो रहती हैं let's say सिंध में 5 साल में, how can she benefit from this technology? Figuring that out is like a different incentive, right? So that's where वो खुद कुछ नहीं कर रहा, and that's my answer. Like it's itself, that's not the problem. Just like Facebook itself is not a problem. काफी कर लिया है. Main answer मेरा ये था. I don't know what to do about this, and that is it. Thank you. Thank you all for coming. This was the 5th episode in the series Design in the World. See you all next time.